अच्छा हाँ, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड रियल नंबर। सिक्स लिख लीजिएगा जरा। राइट डाउन द सिक्स टर्म, टाइम पीरियड। प्लीज राइट। सिक्स था क्या है? सिक्स टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड है आपका, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, दैट इज नोटेड बाय कैपिटल पी। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? देखिएगा, द टाइम टेकन for two adjacent for two adjacent crests, two adjacent crests or crests or troughs to pass through a particular point. To pass through a particular, यानी एक वेव को, the time taken to for a wave to pass through a particular point, एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आप किसी चीज को फ्रीक्वेंसी से देखें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या था? If you guys remember, does anyone remember what is frequency? बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या है? Number of waves that pass through a given point. इन 1 second. अरे हाँ, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास ऐसा हम कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। लेट अस सपोज f is the number of waves passing in 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, मान लीजिए द फ्रीक्वेंसी इज 1000, दैट मींस 1000 वेव्स आर पासिंग इन 1 सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वन वेव विल पास इन 1/f seconds. If 1000 waves are passing, if 1000 waves are passing in 1 second, that means one wave will pass in 1/1000 seconds. ठीक है, एंड ये वन वेव विल पास जो है ना, एक वेव को पास करने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। So directly we can say that time period is equal to 1 upon f. 1 upon frequency will be equal to the time period. I hope this makes sense. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, guys.
भाई साहब कितना टाइम लगा रहे हैं? गाइस प्लीज रेज द हैंड वंस यू आर डन. Waiting for Abu Bakr and Ali. Just waiting for Abu Bakr now. चलिए अबू बकर तो हो ही गया होगा. लास्ट पॉइंट पे होंगे शायद. ठीक है. नाउ उसके बाद देखिएगा रिलेशंस बिटवीन above terms. So the terms that you have written, wavelength, frequency, speed of electromagnetic radiation, all of these, इनके बारे में क्या लिखेंगे? There are some relations between them. ठीक है. What is the relation? Lambda into nu, it is equal to the speed of light. ठीक है. तो समझने के लिए अब अगर देखें तो lambda it will be in meters and frequency it will be in second inverse. Meter per second. क्या देगा आपको? It will give you the velocity of that thing. If you multiply wavelength into frequency, you will get the speed of that electromagnetic radiation. Speed of electromagnetic radiation is equal to c, that is the speed of light. So we can say that mu it is equal to the frequency, it is equal to c upon lambda. अच्छा इसको ना 1 upon mu भी लिख दीजिए because we are going to represent frequency as mu ना. It will be 1 upon mu. So mu is equal to c upon lambda. अच्छा, so we can also write mu it is equal to 1 upon lambda into c. What is 1 upon lambda? 1 upon lambda is wave number into c. This is the frequency. This is frequency. Right? अच्छा, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू. टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू. सो time period is reciprocal of frequency. Time period is reciprocal of frequency. Reciprocal of frequency. Time period it is reciprocal of frequency. Frequency is c upon lambda, तो time period क्या हो जाएगा? lambda upon c. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Yes, ठीक है. sir. Whether we can also write frequency it is equal to 1 upon time period, ये भी लिख सकते हैं. Frequency it is equal to 1 upon time period. Frequency it is equal to 1 upon time period. We also know that frequency is equal to c upon lambda, it is equal to 1 upon time period. तो सेम ही चीज है, करते जाइए आप इस तरह से. ठीक है. So these are the major relationships जो आपको याद रखने. Now we are going to do a series of numericals, and in those numericals, first of all, I will give you some tips on how to do those type of numericals. ठीक है. I hope you have done writing this. If you are writing, please raise your hand once you are done writing. Tips for calculation तक लिख के हाथ रेस कर दीजिए. Tips for calculation. Abu Bakr, Alina, and Ali, waiting for you guys. Tips for calculation. सबसे पहला जो टिप है आपके पास ना, simplify the units. Many of the problems that you will do, you have to first of all simplify the units, then you will understand whether you are calculating the right thing or wrong thing. है ना? मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आप जो like whatever formula you are using and according to those units आपके पास मीटर आ रहा है. After solving, you are getting what? After simplifying each and everything, आपके पास क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है.
So this can never be possible. Frequency is what? Second inverse. So the unit that you should be getting is what? Second inverse. You are getting meters. That means you are doing something wrong. So even before doing the calculation, if you like, if you have that much ability to just go through the units, overview the units, and don't write the units also, then also it is fine. But what I would suggest is that if you're not able to overview regarding the units, what will be the final unit of the answer, please write the units एक साइड में numbers लिखें, एक साइड में units लिखें. Units से पहले what you need to do, you need to first of all simplify the units, है ना, and then check whether you are getting the right unit or not. ठीक है, ये चीज पहले कर लीजिएगा, because that will say if you are putting a wrong formula that will save you a lot of time. कि आपने पूरा कैलकुलेशन किया उसके बाद गलत आंसर आ रहा है ना, तो वो चीज नहीं है. ठीक. Next thing that we are going to do is simplify the powers of 10. Simplifying the powers of 10. ठीक है, आपको निकालना था जैसे फ्रीक्वेंसी, है ना. एक मिस्टेक क्या हो सकता है, आपका आंसर किसमें आ रहा है, मीटर में आ रहा है. तो दिस इज तो इंतहाई गलत है ना ये चीज. तो दिस इज नॉट इवन पॉसिबल. दिस इज नॉट. मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आना चाहिए था, मान लेते हैं इसको, आंसर आना चाहिए था 120. ठीक है, कितना आना चाहिए था 120, एंड यू आर गेटिंग 120. अच्छा 120 सेकेंड इनवर्स आना चाहिए था, और आपको क्या मिल रहा है 120 मीटर. ये तो कभी सही नहीं हो सकता है, ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता है. ठीक है, बिकॉज मीटर और सेकेंड मतलब अलग ही चीज निकाल ली आपने. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना. सबसे पहले इसको अवॉइड करेंगे तो कभी सही नहीं हो सकता है. उसको लिख देखते हैं. अनदर, आपने क्या मिस्टेक किया, ओरिजिनल आंसर 120, आपने निकाला 1.2 इंटू 10⁻⁻5. अच्छा वो भी छोड़ देते हैं ना, इसको थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं, 1.2 इंटू 10⁻². आपने निकाला 10⁻6. 1.2 तो सेम है, यहाँ पे भी 1.2 क्या है, सेम है, राइट. लेकिन यहाँ पे आपके पास दिस इज 120, दिस इज आई डोंट नो हाउ मच, 1 2 0 0 0 5 zeros. After 1 2 there will be 5 zeros. So obviously this is very far away, and second inverse ये मान लेते हैं, यूनिट सही है आपका. और दूसरा आंसर जो आपने निकाला दैट इज 1.3 इंटू 10⁻². इन सब में बताइए सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, विच इज द क्लोजेस्ट आंसर, ए बी और सी, विच इज मोस्ट करेक्ट. टेल मी गाइस, कौन सा आंसर सबसे सही है, विच इज लाइक नियरेस्ट टू द करेक्ट आंसर, विच इज क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर. जी बोलो भाई, अबीर, अबू बकर, अली, टेल मी गाइस, which one of these is the closest to the correct answer. अलीना बताइए, सबसे ज्यादा नजदीक कौन है सही आंसर के. ये सभी, अलीना, अबू बकर, अली. बात सर, ये जल्दी बताओ भाई, इतना क्या दिमाग मेरा खराब कर रहे हैं आप लोग. टेल मी गाइस, which is closest. नहीं बता तो फिर बोलो. जी अलीना, क्या लगता है आपको. अलीना, आर यू देयर. पूछना सवाल. Yes, sir. Please, तो फिर आंसर करें ना भाई, विच इज द क्लोजेस्ट, विच इज आंसर 1.3. एबीसी में कौन सा क्लोजेस्ट है आंसर के. द करेक्ट आंसर इज 1.2 into 10⁻². विच इज द क्लोजेस्ट. डू यू थिंक दिस इज 1.3. क्लोजेस्ट. 1.3 into 10⁻². ना, इवन तो आपको नंबर सबसे करेक्ट कहाँ मिल रहा है, द करेक्ट डेसिमल्स और द करेक्ट नंबर यू आर गेटिंग एट इन द पी आंसर. बट इफ द एक्सपोनेंट इज रॉन्ग देन योर आंसर इज फार अवे. ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बिकॉज वाई, बिकॉज यूनिट्स आर रॉन्ग तो कोई चांस ही नहीं है आंसर का सही होना. आंसर का सही होने कोई भी चांसेस नहीं है. इफ योर एक्सपोनेंट इज रॉन्ग बट द यूनिट इज राइट, नाउ यूनिट आपने सही कर लिया. इफ द एक्सपोनेंट इज रॉन्ग then your answer will be very far away from the correct answer. If the number is wrong but the exponents are fine, if the powers of tens are fine, that means your answer will be wrong, but your answer will be not right, but it will be close to the correct answer. ठीक है. After simplification of the powers of 10, you are going to simplify the, लेकिन फॉलो तो करेंगे नहीं आप लोग, फिर भी बता देते हैं. Simplify the numbers. Simplify the numbers. Now, if you are not, what I would say is, turn fraction to decimal only for
द फाइनल आंसर। अगर आपका फाइनल आंसर नहीं है, आई मीन इफ यू हैव समटाइम्स आता हो ना, पहले ये कैलकुलेट करो, उसके बाद फिर इसको उसके फॉर्मूले में रखो, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर, है ना। दो स्टेप में कभी कभी करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोलैरिटी, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, देन प्लग इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, देन कैलकुलेट द मोलैरिटी। ठीक है, इसमें अगर ऐसा करना हो, देन नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसको डेसिमल में मत रखिए, कीप द नंबर ऑफ मोल्स इन फ्रैक्शंस ओनली, turn the fraction into decimal if you are at the last or the final answer. Final answer वाले स्टेप में आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। कीप एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस। सब कुछ समझ गए फ्रैक्शंस। और जो अगला पॉइंट है, दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन, ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज। ठीक है, कोई भी बैक बैक साइड में कैलकुलेशन मत किया, ठीक है, बिकॉज बैक साइड में क्या होता है ना, वंस यू मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये अपनी 10th क्लास में ही जो आप एक सवाल में एक कैलकुलेशन कर रहे हो गया, एक एक ही सवाल में तीन चार बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कैलकुलेट ऑन द सेम पेज, बिकॉज तुरंत आप करेक्शन कर ले, इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन यू कैन डू द करेक्शन। नाउ इफ यू विल गो बैक, ऑलरेडी देयर विल बी टू मेनी कैलकुलेशंस डन, फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा, है ना। हड़बड़ी में वहां पे गंदगी होगी, है ना। एंड यू आर गोइंग टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑन द फेयर पेज। जो आप रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी को तो कॉपी कीजिएगा फेयर में। तो जब आप गंदगी से रफ कर रहे हैं तो फेयर सही आने के चांसेस तो कम हो जाते हैं। वो जो आप गंदगी से कर रहे हैं, दैट इज द रियल थिंग दैट यू आर डूइंग। आंसर लिखना तो हमारा एंड गोल नहीं है ना, आंसर आना चाहिए। तो आंसर आने के लिए, इफ यू वांट टू गेट द आंसर, यू हैव टू डू फेयर कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशंस ना किया करें। इफ यू आर गोइंग टू डू रफ कैलकुलेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स बिकम्स हायर। 32 को 23 ले लेंगे, आंसर में है 10.11, आप लीजिएगा 11.10। All of this would occur if you are doing rough calculation. In order to avoid these things, do the calculation in the same page. We are doing the wherever you are doing the problem, wherever you are solving that problem, उसी पेज में right side में आपका समान draw a line, then do the multiplications and everything. Another thing that I will suggest is two non-zero digits after decimal is enough. दो डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट आ जाए नॉन जीरो, है ना। ऐसे अगर आपके पास मान लीजिए 1.02 आए, तो इसके बाद एक और ले लीजिए, टू के बाद मान लीजिए आपके पास 9 आ रहा है, तो इतना इतना कर लीजिए। बट इफ यू गेटिंग 1.31 पे रुक जाएगी, डोंट डू एनीथिंग, राइट। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1.00 तो 000 करके 00039 ऐसे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टू नॉन जीरो तक ठीक है। अगर आपको जीरो जीरो मिल जा रहा है तो फिर 1.00 करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आई होप इतना आपने, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट काफी है, डेसिमल के बाद दो डिजिट, एंड बहुत रेयर केस में थ्री डिजिट, बहुत रेयर केस में थ्री डिजिट, ठीक है, उससे ज्यादा मत जाइए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डिवाइजिंग थिंग्स, डिवाइडिंग स्पेशली व्हेन यू आर डिवाइडिंग। इतना कुछ मैंने बताया, इसको लिख लीजिए प्लीज, राइट दिस इन योर नोटबुक, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
Waiting for Abu Bakr, Alina, and Ali. Just waiting for Abu Bakr. Check. Write a question. Yellow light emitted by a sodium lamp. Emitted by a sodium lamp has a wavelength has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency. Calculate the frequency of this light. Frequency of this light. Okay. We have been given lambda is equal to 580 nanometer. Okay. Nanometer मतलब 580 into 10 to the power minus 9 meter. We have seen the formula. Frequency is equal to C upon lambda या फिर बेसिक जो फॉर्मूला सबसे पहला वाला lambda into frequency it is equal to C. The frequency will be equal to C upon lambda because they have asked us to calculate the frequency. What is C? C it is equal to 3 into 10 to the power 8 meter second inverse divided by what is lambda? Lambda is 580 into 10 to the power minus 9 meters. Meter and meter will get cancelled. You are getting the frequency in second inverse. Your units are correct. Once you're done with the units, you will write P upon 58 into 10 to the power 8 minus 8. देखिए यहाँ पे 10 है ना 580 को क्या लिख सकते हैं 58 into 10 10 into 10 to the power minus 9 will be how much minus 8 minus 8 will go above it will become plus 8 so this is the frequency अब देखिए 3 upon 58 पे approximately you can write 0.05 because 3 upon 58 will be approximately equal to 3 upon 60 3 upon 60 कितना हो जाएगा 1 upon 20 1 upon 2 कितना होता है 0.5 divide by 10 है ना 20 को क्या लिख सकते हैं 1 by 2 into 10 0.5 upon 10 will be equal to how much 0.05 we can write as approximately 0.05 into 10 to the power 60 and we can write further 5 into 10 to the power 40 second inverse. Copy this down. Let me know if you have any doubts. तो अपन अगर 58 करते हैं एक्चुअल आंसर आता है 0.051 so I hope this is very much मतलब very close to the correct answer. करेक्ट आंसर आपका कितना आता है करेक्ट आंसर आता है आपके पास 5.1 into 10 to the power 14 second inverse आपका आंसर कितना है 5 into 10 to the power 14 second inverse ठीक है तो now these are same ये भी काफी close है so that's fine once your exponents are units are correct उसके बाद आप approximations कर सकते हैं waiting for a beat. Please raise your hand once you're done, guys. Raise your hand once you're done.
Just give me a second, right? चलिए, अगला सवाल लिखिएगा। एक सवाल और करते हैं उसके बाद just do one question from the NCERT. Um, just give me a second. ठीक है सर। इसको कीजिए। We can see the 1368 kilohertz. In your notebook, you should know what is calculate करना है, ठीक है? You are free to look at your notebook, है ना? Notebook में आप देख सकते हैं, फॉर्मूला वार्मूला सब कुछ देख सकते हैं।
अबीर हो रहा है? जी अबीर। हाँ सर, हो गया। अच्छा आंसर आ गया क्या? आंसर ठीक तो है लेकिन मतलब थोड़ा 0.00 10 to the power 5 तो मतलब समझते हैं आप 200 बोल रहे हैं राइट? Guessing the answer. हाँ, you can get a bit more closer to the answer by the way. 200 is fine, correct है. It's very close to the, it is very close to the correct answer, but you can get a bit more closer. What did you, what did you approximate 1366 say? Yes, Abir? Sir, I did it directly. I did not approximate. I did it directly. So I got 0.02121 21, something 218. तो 218 कर दीजिए ना, तो that's very close to the answer approximate, तो बिल्कुल सही आ जाएगा. It will be very close to the Oh, answer. 218, 0.00218 into 10 to the power 5, right? That will be 280. हाँ The correct answer exact answer so 19.3. Very clear. Others please see. Like lambda upon lambda. We have seen for many times lambda will be equal to c upon frequency. C is equal to 3 into the power 8 meter per second. What is the frequency? 1368 into 10 to the power 3 kilohertz. And what is hertz? Hertz is second inverse. Instead of writing second inverse, second inverse cancel each other, we'll get the answer in meters. Yes, that is correct. Lambda is always less than 3.13 से होगा मतलब the answer right now directly. आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा this will be वैसे कर लीजिए आप 3.168 into 10 to the power यहाँ पे दिया -3 and 3.168 will be approximately uh, approximately 2.19 into 10 to the power equal to 2. ठीक है एग्जैक्ट आंसर हमने लिखा है. आई होप first step to you were all based that's formula. I have plugged in the values. I hope that you're clear with that also. Kilo is 10 to the power 3, hertz is second level. And 10 to the power 8, say we took 3 zeros and we put it in 3, so it became 3000. 10 to the power 8, it became 5, and 10 to the power 3 is minus 3. Take a please copy this down. Raise your hand once you're done, guys. बाकी को भी करना चाहिए था. Just waiting for Abu Bakr. After this, please write characteristics of electromagnetic waves.
ठीक है, इसमें बस आपको लिखना है, कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है, कीप राइटिंग विथ मी। इट कंसिस्ट ऑफ electric and magnetic oscillate in the direction perpendicular, है ना, to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation. Basically, you are having three different, आपके पास there are three different axes. ठीक है, don't make right now. ठीक है, देखिए, for example, this is the magnetic field, this is the electric field, and this is direction of propagation. Direction of propagation. ठीक है, तो I hope you know that x axis and y axis are perpendicular to each other. The axis is perpendicular to both of them, and all of these axes are what? Mutually perpendicular. X is perpendicular to y is perpendicular to z, z is perpendicular to x. Okay, all of these are what? Mutually perpendicular. वैसे ही, like if the magnetic field is in the y-axis, the electric field in the z-axis, then the direction of propagation is in the x-axis. Okay, so this is the meaning of when we say that it is all of these are mutually perpendicular. Another 2 points that you write, एक तो पॉइंट हमने पहले लिखा हुआ है, speed of electromagnetic wave it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Also, electromagnetic waves do not need any medium for propagation. Any medium for propagation. For example, if we talk about sound, in sound they do need a medium for propagation. And for example, if you speak through air, then you will hear something. But आप लोग ऐसे bench में ना कान रख के करते हैं, टक 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 टक. So how that voice is passing through in the bench is passing through the word. So all of these things they need some medium for propagation, but electromagnetic radiation they do not really need any medium for propagation. That is why the sun rays, which are also electromagnetic radiations, they reach the earth in the vacuum also, through the space also. Right? Raise your hand once you're done. Now, we're waiting for you. दोहर का नाम नहीं पता कि जल्दी जल्दी लिखना चालू कर जल्दी लिखे वो पुत्र next we need to learn the electromagnetic spectrum.
electromagnetic waves spectrum. Okay. So what are the different electromagnetic waves? We are going to arrange the electromagnetic radiations or electromagnetic waves in the decreasing order of frequency. Okay. सबसे ज़्यादा frequency cosmic waves or cosmic rays. Then we have gamma rays. Then we have the X rays, UV rays, visible region or visible. तो UV का मतलब क्या होता है पता है? अल्ट्रावायलेट रेज. उसके बाद विजिबल में if I go from higher energy to lower energy, तो violet, indigo, orange, yellow, with violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, है ना? With your so from higher frequency to lower frequency. Then you have the infrared region, infrared rays. After that, you have microwaves. Then you have radio waves. ठीक है. So basically, how इसकी याद कैसे रखी जा सकती है? Cosmic gamma X UV, visible IMR. Repeat it 10 times and you will easily remember. Cosmic gamma X UV, visible IMR. And this whole thing is written in decreasing frequency. Now, obviously, if the frequency is decreasing, frequency is decreasing. Wavelength will be increasing from top to bottom. Top to bottom क्या होगा? Wavelength increase करेगा, and frequency क्या करेगा? Decrease कर रहा है. If frequency is decreasing, energy will also decrease. ठीक है? The relation between the frequency and energy we are going to study just now after this topic. ठीक है. Cosmic gamma X UV, visible IMR. Cosmic gamma X UV, visible IMR. There are other mnemonics also. ठीक है. मतलब ये मेरा खुद का बनाया हुआ, that's why यही याद है. Just give me a second. Waiting for Abu Bakar. Waiting for Abu Bakar. अब before going to the next topic, थोड़ा हम आप लोगों से ना एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं. There are certain things that are continuous. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ. There are certain things which are continuous. And for example, you take a pipe जिसमें पानी आ रहा है, and you start sprinkling that water in a wall or something like that. So what will happen? A stream of water is going to hit the wall continuously. Because there are some things which are continuous. A stream of water is what it is, hitting the wall continuously. Okay. There are some things which are called, what we can call is discrete. Discrete means it happens, like one thing happens, then another thing, then another thing. For example, you are hitting a stone in the wall. Regularly, you cannot hit a stone on the wall, right? Not regularly. There will be, you will hit one, then another, one stone, two stone, three stone, five stone, six stone. You cannot hit 2.5 stones. You cannot hit 6.6 stones. 6.6, how can you hit 6.6?
It is not even possible. ठीक है? So when we talk about discrete things, they come in certain number of entities, 1, 2, 3, 4, counting numbers में आएगा. Those what we can call as discrete. Does continuous and discrete make sense? Yes or no, please tell me. Does Yes. continuous सबको समझ में आया? Everyone understood that discrete and continuous? संजी बताएं. नहीं Yes. समझे क्या? All of you understood, okay. I want to make a wall. Wall बनाना भूल गए. कैसे बनाते हैं wall? Give me a second, guys. ऐसे नहीं बनता है. I think I have to do this. लेकिन आपको नहीं बनाना है सर. ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको. अच्छे से बने कोई चीज तो अच्छी लगती है. दिस इज अ वॉल है ना. आई होप यू कैन. कुछ नहीं, आपको सिर्फ सुनना है. ठीक है. डोंट प्लीज डोंट मेक दिस. अब ये क्या बना है सर? ये मेरा पाइप है. पाइप जैसा लग रहा है ना. पाइप जिससे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट वाटर फ्रॉम यू एंड यू आर गेटिंग वाटर ऑन दी वॉल. यू आर गेटिंग वाटर ऑन दी वॉल. हमने वॉल को ब्लू क्यों कर दिया? पता नहीं क्यों कर दिया हमने वॉल को ब्लू. क्यों कर देते हैं हम? रेड कर देते हैं ना. रेड ब्रिक रहता है. हाँ, रेड कर देते हैं. और वाटर हिट कर रहा है. इट सीम्स कंटिन्यूअस. ठीक है. इट सीम्स कंटिन्यूअस. कोई माइक ऑन कर लेते. आई वांट टू आस्क समथिंग. ये बाकी लोग को फिर समझ में आए. कोई प्लीज जल्दी कर दो. अरे जल्दी करे भाई. किसको समझना है? जो माइक ऑन करेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा. अरे बोलो. हाँ, अरीना को समझना है. ये सलीना. अबीर को समझना. अरे माइक ऑन करके रख दो. छोड़ दो. माइक ऑन करके रखो. मुझसे सवाल पूछेगा. माइक ऑफ कर. माइक ऑन कर. हाँ, ठीक है. थैंक यू. अबीर इज हियर. थैंक. तो अबीर, वी आर गेटिंग द वॉल विद we are spraying water on the wall. So water getting the wall, it is a continuous process. Correct, Abhi? Yes, sir. पक्का है ना? Yes, sir. हाँ. थोड़ा स्लो मो करते हैं इसको, है ना. स्लो मोशन करते हैं. फाइन. स्लो मो we have infinite technique of vision. So we can say सब कुछ कर सकते हैं. We have that type of vision now. You can imagine that. अभी ये सुनो. हाँ सर. नो बोला. यस बोल. सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है. हाँ, तो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं. Let us suppose we have a super car. You can slow things. जो वाटर हिट कर रहा है ना वॉल पे, उसको बहुत इंफिनिटली स्लो कर दे. एंड यू हैव अ पावर दैट यू कैन इंफिनिटली जूम इन. यू कैन जूम इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग infinitely, and you can infinitely slow the time. You can imagine that, Isama? Yes, sir. Now, when you have infinitely slowed the time and infinitely zoomed in the wall,
what you can see is one water molecule hitting the wall, another water Yes. molecule hitting the wall, then another water molecule hitting the wall. It will be very similar to, the, like, for example, you are hitting like water balloons. Like you are hitting stones, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. Make sense, Abhi? हाँ sir. So seemingly things which looks that they are continuous, but in reality तो यही हो रहा है ना अभी कि एक water molecule hit कर रहा होगा फिर दूसरा, even though that is happening very fastly, but in reality तो one water molecule hitting, then the other, then the other, then the other, then the other. But this is happening very fastly, so we cannot see one water molecule. We cannot distinguish between one water molecule and the other water molecule. We do not even have that vision to see a water molecule. But in reality तो यही हो रहा है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा. मेक सेंस अभी? हाँ sir. Yes sir. ठीक है. तो उसी तरह से बिल्कुल थ्योरी आई. फॉर एग्जांपल ये जो seemingly continuous things are actually discrete. ये बेसिक फंडा है. When you have a very hot body, and this hot body is like red hot. Now, if you come closer to it, you will experience heat, and that heat will be experienced, and you will think that it is continuous. It will feel like it is continuous. But as the water molecules hitting the wall is discrete, उसी तरह से that heat waves that is coming and touching your skin, those are also discrete, not continuous. There are packets of energy. So this particular thing is emitting what? It is emitting heat waves, and these heat waves are also not continuous. They are continuous. In reality, they are what? In reality, they are discrete. So they are, for example, water molecule A, water molecule. Similarly, energy is also discrete, in which you have energy in small packets, and that energy in small packet is called quanta. Quanta because quantitative count करने वाली चीज से quanta आया है, right? Quantitative, and this was given by Planck. Now, the empirical evidences for this particular theory is obviously ऐसा नहीं कि आगे Planck ने बोला देखो दीवार में पिचकारी मारते हैं तो वाटर. It is just to explain things to you. That's not how things are proven. And how things are proven वो आपको सिलेबस में है नहीं, बस आपको याद रखना कि अच्छा ठीक है, हाँ मतलब जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं, that is not the reality actually. How we perceive things is dependent on many other things also, right? But in reality क्या हो रहा है? Water molecules is hitting one by one. Similarly, one packet of energy is hitting your body, then another packet, then another packet, then another packet, and what you are feeling it because it is happening so fastly. You are experiencing it as a content. Actually, में वो क्या है? Actually, वो discrete है. That is what Planck's quantum theory. जी हमें हेलो गाइस, हमें ऑडिबल यार कोई तो बता दो यार. Yes. क्या आपको समझिए बच्चे हो चुके हैं, पूछते हैं हम इतना कुछ तो बताते हैं. थैंक यू अली. प्लीज राइट. The energy is emitted or absorbed discretely. Discrete in the form of packets of energy. Form of packets of energy called quanta या quantum.
And the energy that is associated with a particular wave, it has been found directly proportional to the frequency. And I'm going to remove the proportionality sign. I will get a proportionality constant, that is h, and this h, it is known as Planck's constant. Where h, it is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into seconds. Joule into seconds. This is if you are having only one photon or one quantum. If we have for n number of photons or quanta, we can write E will be equal to n into h2. Or we can also write this term as a E, it is equal to n hc upon lambda, है ना? इसको भी लिखा जाता है ऐसे E, it is equal to hc upon lambda. hc upon lambda. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, please. We were doing problems with one lambda. अब बस यहाँ पे Planck's constant आ चुका है ना? And you will write a note that will help you, that will help in your energy is in electron volt, lambda is in nanometer. है ना? Energy किसमें? Nanometer. Then we can directly write E, it is equal to 1240. 1240 divided by lambda. अब आपको जो 2 नैनोमीटर तो 2 सेकंड कीजिएगा ना, यू डोंट नीड टू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एनर्जी. What is 1 electron volt? 1 electron volt, it is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Even though if they're asking answer in joules, आप क्या कीजिए? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दीजिए, and once you get the answer in electron volt, you just multiply 1.6. 1.6 का multiplication बहुत ही आसान. If you're going to take say that part 6.626 into 10 to the power minus 34, then you are going to multiply 3 because of
the speed of light 3 into 10 to the power 8 meters per second, then you are going to divide by the lambda, then it's going to be very big. ठीक है? For example, एक सवाल भी करा देते हैं आपको. Lambda it is given as 240 nanometer. 240 nanometer. Calculate energy associated with the wave. ठीक है, so we can directly write solution क्या होगा इसका. Energy it is equal to 1240 divided by 1240 divided by what is the nanometer? 240 nanometer. सीधा लिख दीजिए 240. ठीक है, so 0 से 0 चला गया, and then you can further solve this. 24 2 is 12 and 124 कितना हो जाएगा? 2 62 हो जाएगा, ये है ना 62. Then we can further go to 6 and this will go to 31, I guess, right? 31. Okay, this will be in electron volts. Whatever you are getting as the answer will be in electron volts. 31 upon 6 will be approximately equal to how much? What digits per C. Final answer thing joules में निकालना ना. Sorry, 31 upon 6. What is electron volt? Electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. ठीक है, अब इसको कर लीजिए. 6 है. इसमें से करोगे 31 upon 6 into 16 into 10 to the power minus 20. 3 this will be 8 है ना. 31 upon 3 को approximately हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं. Into 8 into 10 to the power minus 20. This the answer is in joules. कितना आ गया आपके पास? 80 into 10 to the power minus 20 joules. In scientific notation, it will be 8.0 into 10 to the power minus 90 joules. ये आंसर आ गया आपके पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करिएगा, then you will be always it be easier. If the things are not given in nanometer, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए नैनोमीटर में, है ना. उसके बाद कीजिए. Copy this down. Just waiting for Ali. Ali, raise your hand if you're done. अब वो कर आपका हो गया, ठीक है भाई. वो कर हम सब हैंड्स रेज आपको कर दे रहे हैं. Ali just waiting for you.